cryptocurrency, financial markets, and financial products. Very, very warm welcome to all you guys, lovely people out there. Uh, how are you guys doing and what's up with the markets? I think today's session is going to be a combination of everything that you know that we have commonly, few things that we talk about on a day-to-day basis, which is like starting a day with taking an update on what's happening with the markets, not just about crypto markets, but also with what's happening with the financial markets on the whole, because ultimately it's the overall market. Uh, so that's what we are. Just a sec, guys. I am actually just collecting some few things out here. Okay.
Yeah, so guys, so sorry about it. I am actually stuck up in some things that I'm doing at the moment. Yeah. So as you all know, guys, that Zbit is finally launched. Zbit is here. Zbit is basically offering spot and futures trading, as we all know. And we have everything that you need in order to start your crypto journey. So here we are, starting the day with knowing a little bit about what's happening in the markets, and then we will be doing analysis on technical aspects of it, and as well as we will be talking everything that's related to crypto and financial markets on the whole. So I'm going to share my link in the stream. Just hold it for a second. Um, just a sec, just a sec. So that's my link, and you can basically use this to download and join the platform. Anyway, so what we're trying to do is I'm going to. So Bitcoin has anyways come back to 118,426. Ethereum 3840, 2.28%. Overall, the market capitalization is standing at 3.88 trillion, BNB at 800, up by 2.3. Most of them are looking like positive. It seems like although whatever the decisions have come on the Federal Reserve side or whatever has been happening in the crypto front, looks like each one of them are positive, not really
negative to look about. The fear and greed index also stands at 62. The volume seems to be good, 170.93 billion. So overall, the Bitcoin dominance is remaining same, 60.6. Ethereum, I think, has slightly increased over a period of time. We are seeing Ethereum growing like exponentially well, which is a good sign, I believe, and others are also on the par. With each crypto, like with Bitcoin gaining so much of momentum and so much of popularity, as well as love, support, and the kind of adoption it is seeing, I guess all the other cryptocurrencies are just going, walking the same path, I believe. So Bitcoin, Ethereum, all of them are standing at good levels at the moment. Bitcoin trading around 118K, holding with a tight range of approximately 115,700 to 118,640. Despite there's regulatory and institutional tailwinds that are going on, decreasing, and they're kind of creating this roller coaster ride. It's still on, a very good ride that it is on, and the prices are speaking for itself. We don't have to really look into something else. It's just very much evident that Bitcoin is actually doing really well. Ethereum up above 3,800, buoyed by interest in DeFi staking and developer activity. Ethereum is gaining a lot of momentum these days, guys, and I'm sure each one of you will vouch for this because there's so much of adoption that is being seen around Ethereum. Ethereum is gaining a lot of popularity with Bitcoin going hand in hand. And in fact, the overall performance of Ethereum seems to be like very much better than even Bitcoin for some reason, like, especially when it comes to a lot of adoption of late. Ethereum has gained a lot of popularity within very, very short period of time. I do remember back in April, it was trading at 1500 or something, and now we are here in the month of July, almost end of July, and we're starting our month of August tomorrow, and we can see that Ethereum has just double up the price, like from 1500, it's gone to 3800, which is tremendous. Almost double the growth that we are seeing. So overall, the crypto markets at the moment, price action is relatively stable. Those recent liquidations, some totaling over 200 million, have occurred following hawkish Fed commentary. So overall, the markets are seeing some kind of positivity. There are liquidations that keep happening, and the liquidations that happen are like in millions and billions of it. So that's why, uh, the thing is, it's kind of going in a different direction altogether. Uh, just a sec.
So moving on to the key development side of it, US exchanges basically they're lobbying regulators to approve a unified listing framework for crypto funds, and JP Morgan is partnering with Coinbase to allow purchases via Chase credit cards starting fall 2025. So we have seen in recent past that credit cards were not something that were, basically encouraged to use for any kind of crypto payments or crypto transactions because, the Federal Reserve or banking sector side of the people were having a lot of issues when, the credit cards, which are the banks lending, uh, what do you call, how do I say this, it's part of their lending activity. They didn't wanted that to be used for buying any crypto, so there was a lot of chaos going on in a little few days ago. I remember, like, not few days ago, I think this discussion has been there for quite some time. So now we can see that they are lobbying regulators to approve a unified listing framework for crypto funds, and JP Morgan is partnering with Coinbase to allow crypto purchases via Chase credit cards, which means that the adoption is rapid on that front, and we can see, if there's an improvement on this front, which was totally banned, like which was totally people were against it. The banks didn't wanted the credit activity, the credit cards to be used for any crypto transactions or something. But right now you can see that the crypto transactions or the purchases can be made through credit cards is itself talking a lot, like it's talking volumes right now. A recent White House crypto policy report also urges the SEC to enact clearer legislation and regulations on digital assets. So that's on the key development sides. On the broader financial markets and macroeconomic side, the S&P 500 has edged lower, down about 0.1%, with a similar modest lift for the Dow Jones, while Nasdaq remains mixed and cautious investor sentiment. So S&P has seen a slow, it has seen a dip that's about 1.0.1%. That is what is being reported. And even for the Dow Jones and Nasdaq, not seeing much growth on that front. It's just they're also on the similar fronts as what is being, seen everywhere. The Federal Reserve Chair, Jerome Powell, as we all know, signaled that there is no change in the interest rates and tamped expectations of a September rate cut. So, of late, we've seen that there was a rate cut that was announced, because of which it was obviously positively impacting um, the markets, but um, basically, it's like the expectations of the rate cut now has changed. He says there is no change in interest rates and tamped expectations of a September rate cut, dropping the odds from 63% to 45%. So the strong Q2 earnings from Microsoft, Meta Platforms, and others boosted investor risk appetite. Microsoft shares are up over 8%, Meta up, lifting futures across indexes. So strong Q2 earnings from Microsoft, Meta Platforms, and other boosted investor risk appetite. So you can see that the technology stocks, the tech stocks, continue to be surging up despite of whatever is happening. So we've seen a very correlated relation with the tech stocks and the crypto markets going, hand in hand. I guess it's correlated because the way tech stocks perform, I think the same similar manner, uh, even the what do you call the crypto markets do perform, because I think because the technology, it's like technology, and this is also crypto is also about technology. Both are having similar line of businesses. That's why we see always whatever is happening with crypto markets kind of tend to happen with um, the tech stocks too. So I think the tech stocks are up. So the market, Microsoft is up by 8%, Meta is up by 11%. So there's like the indexes are doing really well.
and it has obviously boosted the investor confidence. So that's what we can see. Though S&P, Dow Jones, Nasdaq is not doing well on the whole, but the tech stocks, on the other hand, is definitely doing well. Coming to just a sec. Okay, let's move. So, guys, I'm so sorry. Actually, some in between, sometimes I'm talking to, you know, I'm trying to talk to a few people out here because sometimes when I'm actually streaming through different platforms, two people do ask me questions, and I'm actually sometimes sending them invites or I'm sending them information about the Zbit platform and all of that. So sorry about anybody. So sorry to keep any one of you on hold if in case you guys are just waiting for me. Yeah, let's just move on. So as I was telling you, the broader financial markets and the macroeconomics, basically the big movers right now are Carvana surged on strong sales. CVS Health has posted positive results. Qualcomm, ARM, and Lam Research has underperformed and weaker outlooks. Robinhood has slipped despite big crypto growth. So this is what overall markets look like right now. This is on the broad. This is on the broader financial markets and macroeconomics perspective. Now, coming to the key themes, earnings momentum from tech giants is offering Fed caution for now. Like I said, right now, even though the other side of the story, like the Nasdaq, Dow Jones, or S&P not doing that well, as I told you that the techs are like doing really well in terms of the way crypto markets are also performing positively. The tech giants are also basically doing well. There is continued tariff concerns at the moment. Notably, copper futures fell by 20% after the President Trump announced 50% duties on copper products. It has heightened volatility across commodities and equities. So the tariffs are just about
eating up all of us, right? It's just never-ending story, I believe. It's to do with all of us. It's to do with every person out there at some point in time kind of hits, it's hits very bad. So at the moment, there is 50% duty that is being imposed on copper products, which definitely has seen that the overall share, the overall market for copper products have fell by 20%. So that itself speaks volumes, right? Like, I mean, if any of the stocks are falling or if any of the stocks are growing like massively, then the volume of it and the price of it is speaking for itself. So that's what I can say. In the UK, FTSE 100 has hit an intraday high on the strong Rolls-Royce earnings and broader tech strength. However, Microsoft and AWS has faced scrutiny from the UK Competition Authority over alleged anti-competitive behavior. So that's about the UK FTSE 100. That's an index that we're talking about. Moving on, what basically are the key points that we need to know in this particular week is the crypto markets. Basically, Bitcoin is holding around 118K. Ethereum is above 3.8K. Regulatory moves are gaining traction. On the US equities side, it's flat to slightly down. Tech earnings are driving the future gains. Like even right now, the crypto markets are doing well as the tech giants are doing well. But then the US equities definitely are slow and steady. And the Fed policy, there's no rate change, of course. There's nothing that has come up. As usual, the decision that was lying with the Federal Reserve that there will be Fed rate cuts or the Fed rate going up. Nothing has changed as such. September cut odds decreasing amid hawkish tone. The commodities tariff side, there has been slight dip, like 20% across, and a broader trade dithers fueling market volatility. So there's a 50% tariff that's being imposed on copper products. It definitely has seen a decline in the overall investing of copper products. And overall global UK markets, if I talk about the FTSE is performing strong, big corporate moves and regulatory scrutiny is underway. So that's about overall crypto markets, overall financial markets, as well as the um, global and macroeconomics that we're talking about. If you have got any further information, if free, you feel you can feel free to share it with me. And as you all know, Zbit is finally launched. Zbit is here. Zbit is accessible through my link, which you can see that Zbit can be directly used for buying and selling cryptos. You can use this platform to start your crypto journey, which can be either a spot trading journey or a futures trade journey that you can start. Let me just open my Zbit platform too. So guys, when you click on my link, which I have shared on the chat box, this is where it leads you to. Can you see this? I'm not sure. I want to show you guys this. So you can see when you click on the link which I've shared in the chat box, this is where it opens and you can use this to download the app. So all the information that you need about Zbit is here. Let me open the Zbit platform. So once you open it, this is how the overall platform looks like. The desktop version of it. You have market information here. You have spot and futures. Under spot, you have 32 pairs that are trading. In futures, you have around 84 pairs at the moment that we are catering to. You get onto spot, you have everything that you need on the screen that you need to start your spot trading journey. Then you have here something called as futures, and futures also have all the information that you need in order to start a chart in a trading view option, and then you have all the other information related to the order book, the orders and everything is here.
order history, P&L history, trade history, open orders, and everything. Coming to the reward side of it, once you enter into this platform using the link I sent you, then basically after downloading the app, you can enter the lottery. You have the chance of earning crypto like crazy. The lottery prize is up to $1,200, which means in case you KYC register yourself, which means just you need to submit your passport copy or a driver's license or one identity document is good enough to start your crypto journey. And once you register yourself, you can basically use this platform to start your crypto journey with spot or the futures trading. So once you KYC yourself, guys, and deposit the money, like starting from $5 to $100 or whatever, uh, that totally is your choice. You can 5x or 100x your lottery winning price too. That's very much possible, and that's totally subject to terms and conditions. So I'm not saying it's a guaranteed reward, but it all depends once you start your crypto journey. So maybe you can just download the app and then start depositing money, and then things like that you can do. So yeah, that's there. And other than that, what else? What else can I actually tell you is, um, yeah, one of the key major things is about, Financial Sector Conduct Authority of South Africa. It's basically governed under that regulatory framework. So basically, whatever money you deposit, whatever amount you deposit into the crypto, your money is safe, your money is protected, so don't worry, because this is also taking into consideration the KYC compliance and all of that. Then you can definitely be sure of the product being genuine and authentic. And also it is basically that your hard-earned money is safe on the platform, so don't worry on that aspect. You just have to start onto the journey. That's all it takes. So I'm going to log into this platform. Let's just see. Uh, it's that easy. Okay. So you see, I have claimed my reward. I haven't KYC myself yet. So still I got this 10,000 pepe in my pocket. Once I KYC register myself and also deposit a little money out here, I'm sure I can basically 5x or 100x my money depending on the reward that I get. So yeah, you can see here. So this is how your spot trading platform looks like. A very easy to use and a very simple platform it is, and very user friendly. So you don't have to basically get on too many things out here. Too easy to understand, too easy to basically like make any kind of changes. Like if you want to change the cryptocurrency out here, you can do that, which you can just change your cryptocurrency out here. You have the live data available, the change, the high, the low, the 24-hour volume, the turnover, all the key features related to the chart out here, the trading view of it, and whatever the information, like the features that you would like to change, whether you want to change the time frames, you want to change the settings, you want to change the chart pattern, you want to change any other thing, all the information, all that features are available here, and you do that. Order history, rate history, funds, spot buy sell,
all these, uh, the type of spot orders, limit, market orders, buy, sell, everything is there. So there's nothing hidden. There's nothing like not hidden. I would say it's like nothing difficult to actually understand. So it's very 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 easy. So yeah, that's about it. You want to add any indicators, you can go here. This is your candle. If you want to change the type of chart that you're looking at, you can do that. Next to it is the indicators option, and you want to add any indicators, delete any of them. Here you have a list of indicators that you can use. So mostly it has all the popular indicators that we use on a day-to-day basis. And here we are. So I don't think it's that difficult to understand. So you click on the full screen information. Also, this is how the platform looks like. You see, everything is here. So in case you want to make any change, you can make the change from here itself. See, I can use my brush. I can delete. I can change the option, or I want to add any other tool here. Maybe I want to use Fibonacci. Let me see if I have Fibonacci. Hold on. Some I don't see the Fibonacci information. So there's no manual input of Fibonacci, I guess. But since Fibonacci will be available in indicators, you can check in the indicator side if Fibonacci is available. Okay, Fibonacci is not available on the indicators also. That's the reason I think we are not able to see that. Anyway, so this is how the overall platform looks like. I don't think it's any difficult. I don't think it is anything hard to understand. It's very much easy, very much fast and quick to understand, right? So what are you waiting for, guys? Use my link, which I've sent in the chat room. I have sent you a link which does open. Once you click on the link, it takes you through, it brings you to this page. So you can, download this directly on the app itself. Like, you can directly download the app, which is very much possible. Okay. Yeah. While you're watching the markets, while we are watching this markets, let's start our technical analysis also in a while. Of late, we have seen all of them going down, pulling back, and then again going back. So let's see.
So, do you guys know that Ethereum basically has given a monthly return of 50% or more in a single month since July 2022? And when Ethereum has actually surged to by 56.62%, uh, adding so a lot of famous analysts they are basically attributing ETH's recent price performance to the net inflows seen across spot ether exchange traded funds. So yeah, so I think that's what is happening. The filings came Monday. JP Morgan is allowing the crypto purchases with Coinbase. We've seen that JP Morgan basically has partnered with crypto exchange Coinbase to introduce crypto integrations to its customers, a step into bridging traditional finance with its digital assets. So a lot is going on behind the scenes about all of them. That's why we are seeing some great surge. Microsoft, Meta, all the tech giants are also seeing some surge. So, what do you think, guys? Where are we heading? What we should be analyzing? Because whatever we analyze on the platform basically remains same for all the cryptos, and it's not just restricted towards one crypto. So when we analyze Ethereum or when we analyze Sui, the technical analysis is going to be same. The first and foremost thing is to analyze if the current price at which the crypto is trading, is it fair valued, undervalued, or overvalued? And how do you find out is through the the formula that I have posted on the platform. You can see on the screen itself what is the formula and how do you value it, if it's undervalued, overvalued, or fair value. Once you get that hint, then you know when to enter and when to exit the market. The easiest way is to make sure that you're using a combination of indicators that you should basically start using, and that is how you can build up the confidence of taking a long position. So yeah. Okay, so let's just begin taking into consideration the undervalue option for it. So the network value to transaction, that's what we usually do, right? So NVT is what we will find out. So that today at this time, at this moment when we are getting into this, are we getting at the right time or are we getting at the wrong time is what we are trying to understand. So Ethereum's market capitalization is standing at 462.73 billion, which is almost like 46, 462, 697, 724, 117. That's its market capitalization, and the volume that it is trading at is 34.31 billion. So divided by 34, 315, 2931, 027. Just a sec, guys.
Okay, let me calculate it again. Looks like something has gone wrong. 462, 696, 809. It keeps changing. That's the problem. Okay, divided by 34,205, 124, 470, 13.52. What do you think is happening here? I think what I feel is that it is trading at undervalue. Ethereum, depending on the usage, depending on its utility, has a lot more potential than what it is trading at. So the price can surge up to, like it can surge to limitless thing that we can talk about. But right now, whatever the price as compared to the market capitalization, the volume it is trading is definitely low. It is undervalued, and so entering into the market at this current stage is still a viable option. But if you haven't explored this option, you need to explore it and you need to enter the market. Now let's go to SUI and check if the price for SUI is also undervalued or if it is so the overall market capitalization is standing at 13.3 billion. So this one's also standing at 8.40. So it looks like this is also not with the current price that it is 1593715. So it also is undervalued at the moment. So there is still potential for it to grow, given that whatever adoption it has and the utility it has, it's currently trading at an undervalued price. So we definitely have some scope even here that it's, SUI is definitely not up to mark. It is not up to the level it has to basically pick up. So as I told you, 0 to 20, 22, 50, 50 and above is the benchmark. And we can clearly see with the calculations we have done that it is currently at a price which is undervalued. So whenever we see that the price is undervalued as compared to the overall supply it has, the volume that it is trading and the market capitalization it has, then there is a lot of scope. Entering into market at this point in time is a very good idea because when the overall price seems to be like undervalued, it is like something you're buying very cheaper. So I have done some research analysis and all of that, and I could find that according to some like reliable resources, so is likely to reach to 4.1, 4.2 again in next coming 5 to 10 days. That's what is being talked about. Not much on the development side, definitely, but yes, overall, once because it's in a pullback, era right now. It's in the pullback zone right now. It will definitely again regain its momentum. That is what is being talked about. And just a sec. Oh God, I'm so sorry. Yeah. So overall, 4.12%, a 24-hour price gain reflects a bullish sentiment from a major cross-chain infrastructure launch, technical momentum and anticipation of regular tailwinds. So ICA's mainnet launched
enables native cross-chain asset control on SUI. Technical breakout above key resistance levels with bullish indicators, and upcoming 173 million token unlock on August 1st will create a mixed sentiment. So now again on the August 1st, the first week of August will be crucial month for SUI definitely, because there will be a token unlockment. And I always tell you guys, whenever there is token unlockment, the chances are that the supply will be like very much high and the demand wouldn't be able to meet up that supply. So that the reason would be like, the price might shoot it down, which is very much possible. So we'll have to watch out. That's for us to watch out in the coming 1 week, starting from tomorrow, because there's token unlocking that's going to happen. And post that, whatever will happen will happen. So we'll have to watch that out and see where it is heading. Right now, the primary catalyst towards why it has surged like crazy is because of the ICA launch with its zero trust MPC network on SUI. So the smart contracts to manage native assets across Bitcoin, Ethereum, and other chains without bridges. So this interoperability upgrade has basically enabled new DeFi use cases, across, including, the lead on SUI network. So that's the reason we could see a major improvement on this. Technical capabilities are also validated and noted by ICA co-founder Omar Sadika. And today marks the start of a new era in blockchain interoperability. So that's what we can see. Let's just also look what is actually impacting the overall Ethereum price. We'll also come back to the Bitcoin side of it. Let's also see what is actually impacting the Bitcoin. Overall, Bitcoin, sorry, Ethereum is also positive 1.54. So there is 200 million Ethereum treasury launched by FG Nexus. That is what is being seen. That's why we can see there's a 24 in between, like 24-hour change that we are seeing. That is because of this. And Ethereum to BTC ratio has gained up like almost 64% since May. And bullish technicals, obviously, with RSI hitting 75.3 and 3571 levels on the Fibonacci support. So the primary catalyst behind Ethereum price to surge is, of course, the FG Nexus 200 million worth ETH treasury strategy. It went live on July 31st, and its primary usage is like converting the cash reserves to Ethereum and preparing with Galaxy Digital Kraken for staking. So this particular movement definitely has seen the price of Ethereum going further up, and it is just continuing to grow. As you can see, it's just not stopping there, it's just going on increasing. With the rally is just on, like, despite of all the negative aspects of it that keep impacting the overall markets, it just comes back to the zone where it is always bouncing back. So right time to buy Ethereum, right time to buy SUI. Seems like they are basically they are on the undervalue side of it, because at the moment we can very clearly see that the kind of price we should be paying to get one Ethereum is definitely undervalued at the moment. So we did some math here, we did some calculations out here to understand if what the price that we're buying at, is it overvalued, undervalued, or fair valued. So we've seen that it's undervalued still, and we can still hope that the prices of Ethereum will surge to go up and up and up. And at the moment, yes, definitely we can. But how do we determine? We are going to add some indicators today, and it's going to be a combination and permutation combination of different indicators that I add in order to determine what price that we can buy at. I'm going to look at the Ethereum's 24 hours low, which has been 3683 is its 24 hours low, and the high is 3877. So right now it's trading at 3830. So
you can clearly see that no, there's not much of difference between the current price that it is trading and the high that it has reached. So uh, is it a right buy position, or is it for us to wait and then take a position? Then my answer to this would be yes, you have to wait, because the low that it has created was around 3600. So entering into the market at 3830, which it is trading, there's a very small thin margin out there where the high that it has made already may or may not reach, or if it further goes down, then what is the solution? So in that case, the best answer is, first and foremost thing that we do is we put our indicators. And today I'm going to put my DMI, which is my directional movement index, which gives me clarity about what the trend looks like and where it is heading. It gives me the indication whether my trend is strong. If it's a uptrend, is it strong? If it's a downtrend, is it strong? And where does my selling and buying pressure remain? Oh, I just opened RSI again. I don't know why did I do this. Why didn't my DMI open? Okay, let me open it again. One second. Yeah. Okay. So here we are. It's a very, very easy way. Guys, I use it as a combination of all the, different indicators. You might as well, keep it a combination of everything. RSI, divergence, or RSI itself, or maybe DMI. DMI is one very beautiful indicator that I have actually, like, of late, uh, like discovered, and I'm actually totally in love with this. And this indicator, I have back tested it like quite some time, and I'm like really happy with its results. Yes, I will tell you one bad thing about this indicator, which you all need to know. And definitely, even you're going to face this issue if in case you use this. The problem with this indicator is whenever you see that the red line on the DMI indicator, which is the ADX in the ADX line, which is the average directional index that it is reflecting. Whenever you see that this particular line is above 25, which reflects that it is a very, very strong trend. The point here is whenever you see it's above 25 or 30 or 40, 50 level, and you see alongside the market is highly, highly volatile at that point in time, the best way to use it is you have to time your things very, very carefully, especially when the markets are highly, highly volatile. While this indicators, especially the DMI and the ADX works like wonders. It works like really crazy. It works really. The sad or the bad side of it is it during the time of volatility, it can totally like shatter you. It can totally take you to a very, very, very crazy roller coaster ride, which can actually impact way too much. And if you do not time your trades properly, like you do not take proper action at proper times, you might fall victim to like losing, not, I wouldn't say losing out on your money, but the losses to that particular thing can be like very, very significant in that sense. Like the moment you don't take any action immediately, you might be locking up your money for whatever time period it is going to get locked. So be very careful with this indicator. While it gives you a very great results, I have back tested it myself. I can tell you the results are good. I am going to explain you how these indicators work also. DMI, which stands for Directional Movement Index, is basically an indicator that helps you understand how the trend is. It's never going to tell you if it is an uptrend, or it's never going to tell you it's a downtrend. All it is going to tell you is whatever the trend is going on. At this moment, you can see that the trend is it, like, let me see. I can say that the trend is sideways, or sideways is slightly breaking into a uptrend is what I can say. Let's just watch it for some more time because the price is slightly coming down right now. So the point here is, okay, I'm in 1 hour candle. I'll change this to 15 minutes because that can give us more clarity. Okay.
Here we go. Yeah. So based on 15 minutes candle, you can see that my trend is an uptrend. And coming to this one, you can clearly see the price went well, like crazily up and then now slightly going down. It's like it's made a wave. It was like it went up and then it went sideways and then now slowly like depreciating, like slowly going down. You can see that clearly. And even on the RSI divergence, it's giving you that clarity. On the DMI, now let's just come to DMI. You see there are three lines and you must be getting confused what those lines are and what is this all कचरा, right? मतलब कचरा नहीं है वो, मैं आपको समझाती हूँ कि लाल वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है वो आपको आपके ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है उसको इंडिकेट कर रही है। तो जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, चाहे वो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, जो भी ट्रेंड होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसको रिफ्लेक्ट करेगी। एंड नाउ हाउ डू यू डिटरमाइन कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं? जब भी आप आपके रेड वाले इंडिकेटर को देखोगे कि वो 25 के अबव चल रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो इंडिकेटर आपको बता रहा है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है 25 के अबव। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। अगर आपकी ब्लू लाइन जो कि DI प्लस की लाइन है, ओके, DMI पे तीन लाइंस होती हैं। एक हो गया रेड लाइन जो बेसिकली ADX की लाइन है, ब्लू लाइन जो बेसिकली DI प्लस की लाइन है, और ऑरेंज लाइन जो DI माइनस की लाइन है। तो जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो बेसिकली 9 पर चल रही है। यू कैन सी द रीडिंग ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ कि 9 या 10 पे चल रही है, 9.7 समथिंग। तो ये आपको क्लियरली बता रही है कि बाइंग प्रेशर जो है ना वो बेसिकली बहुत डिक्लाइन हो रहा है और हो गया है। अगर वो भी आपको ब्लू वाली लाइन बेसिकली 25 के बिलो नजर आएगी या 20 के बिलो नजर आएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत वीक चल रही है। अगर वो 20 या 25 के अबव चलेगी तो आपको पता रहेगा कि बाइंग प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी बायर्स ने कंट्रोल लेकर रखा हुआ है। फिलहाल जो अभी आप देख सकते हो उसमें ये क्लियरली बता रहा है कि बाइंग प्रेशर क्लियर, मतलब बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग नहीं है। 9 पर चल रही है वो, तो बेसिकली आपका ट्रेंड बहुत वीक हो रहा है। जो भी लाइक हाई जो अप ट्रेंड बना रहा था वो अभी अभी वो बेसिकली डाउन ट्रेंड बना रहा है, बिकॉज सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया, सेलर्स ने बेसिकली कंट्रोल ले लिया। आप देख सकते हो ऑरेंज लाइन जो DMI पर नजर आ रही है वो 25 के अबव है, यानी 26.5 इज व्हाट इट इज ट्रेडिंग एट। तो वो 26.5 जो आपको एक रीडिंग बता रही है वो बेसिकली we'll go to this news later on, मैं इस पर भी आऊंगी। खैर, so what I was telling is कि ऑरेंज लाइन जो है ना वो 25 के अबव चल रही है। यहाँ पर हमको एक चीज हमेशा करनी चाहिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ले और 25 पे आप लगा ले, इसके थोड़े से कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दें और इसको 25 पे प्लेस कर लें, ताकि आपको पता रहे जब भी ये आपकी तीनों लाइन अगर 25 के ऊपर होंगी तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। रिमेंबर दिस वेरी वेरी क्लियरली कि ADX की लाइन रेड लाइन है, ब्लू लाइन है DI प्लस की। जो ब्लू लाइन रिफ्लेक्ट कर रही है वो बाइंग प्रेशर को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो बाइंग प्रेशर अगर आपका ज्यादा होगा, यानी बायर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट, तो आपका ब्लू लाइन ऊपर जाती हुई नजर आएगी जो कि 25 के अबव हो जाएगी, और बेसिकली वो आपको क्लियरली इंडिकेट करेगी कि बायर्स आर इन कंट्रोल ऑफ इट। तो आप उस समय पर ट्रेड ले सकते हो। आपका जो ट्रेडिंग का जो एंट्री पॉइंट बनती है वो उस समय बनती है जब आप देखते हो कि 25 के ऊपर आपका DI प्लस और ADX दोनों ऊपर है और आपका ऑरेंज लाइन बेसिकली 25 के बिलो है, तो दैट इज योर आइडियल पॉइंट ऑफ एंट्री। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इंडिकेटर है, काफी आसान है समझने के लिए। थोड़ा सा आप इसको एनालाइज करेंगे, जैसे आप अगर इसकी सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर आप इसकी सेटिंग पर जाओगे, I'll show you, एक मिनट, इसकी सेटिंग यहाँ पर है। आप देख सकते हो कि ऑरेंज लाइन ADX की लाइन है, DI प्लस जो है ये ब्लू लाइन DI प्लस की लाइन बेसिकली बाइंग की लाइन है। बाइंग प्रेशर, इट रिफ्लेक्ट्स बाइंग प्रेशर, यानी बायर्स आर इन कंट्रोल।
DI माइनस जो ऑरेंज लाइन है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो सेलिंग प्रेशर को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो तीन ही चीजें, तीन चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रख लो। और मैं ये नहीं कह रही कि इसको इस्तेमाल करते ही इमीडिएटली अपना ट्रेड लो, एक दो चार बार अपने ट्रेड को बैक टेस्ट करना ना भूले गाइस। कोई भी इंडिकेटर जब पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि while these indicators are all man-made tools और ये काफी कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं, लेकिन एक आप लोग से सबसे मेरी गुजारिश है कि इसको बैक टेस्ट जरूर कर लें। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, इफ यू नो कि आपने एक दो चार डमी ट्रेड्स पहले इसके बेसिस पे ले रखे और आपने अगर सक्सेसफुली इनको ट्रेड लिया है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल, तो फिर आप श्योर हो सकते हो कि आपके जब नेक्स्ट टाइम रियल ट्रेड्स होंगे तो वो भी आपके सक्सेसफुल होंगे। तो प्लीज डोंट गेट ऑन टू दैट। अभी मैं ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चल रही हूँ। Another key important factor to remember is you also have to check it on the different time frames too. मैं RSI को स्पेशली बहुत ज्यादा हर टाइम फ्रेम पर देखती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी ओवरसोल्ड टेरिटरी और ओवरबॉट टेरिटरी दोनों जाननी होती है। और वो जब तक 70 के अबव या 30 के बिलो नहीं चला जाता ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, तब तक मैं श्योर नहीं होती हूँ कि मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं। अभी 3 मिनट्स पर देखो, 3 मिनट्स पर 31 पे चल रहा है RSI। सिर्फ अभी RSI की बात करते हैं फिलहाल। 15 मिनट्स पे वो 29 पे पहुंच गया है, यानी ठीक ठाक पोजीशन बनी है। यहाँ पर 30 के नीचे चला गया, यहाँ पर 36 पर पहुंचा है 30 वाली मिनट पे, 45 मिनट्स वाले पर 42 पर है। तो 1 आवर वाले सेशन में बेसिकली 44 पर पहुंचा है। तो मैं अगर इसका वापस 15 मिनट्स वाला लगा लो तो ये अभी बेसिकली ओवरसोल्ड में आ चुका है। तो हम अभी भी स्टिल बेसिकली अपना डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़े टाइम फ्रेम्स पर बेसिकली अभी वो स्टिल ओवरसोल्ड पर नहीं गया है। अभी मैं अपना RSI को थोड़ा सा बंद कर दी हूँ और फिर मैं यहाँ पर अपना फिबोनाची लगाने की कोशिश करती हूँ टू सी कि मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से ऊपर है या फिर ये रिट्रेसमेंट के नीचे है। अभी आप देख सकते हो ये 0.38 को छूकर बार बार वापस जा रहा है। ओके, यानी प्राइस अभी रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर ही है। तो इसके चांसेस स्टिल अभी भी बनते हैं कि प्राइस फिर से वापस से ऊपर को शूट कर जाए, वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि उसने रिट्रेसमेंट लेवल्स के नीचे क्रॉस नहीं किया। अगर वो रिट्रेसमेंट लेवल्स जैसे 0.6 हो गया, 0.7 हो गया या 1 पर पहुंच जाता है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि शायद अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा और फिर वहां से प्राइस को वापस से उठने के लिए टाइम लगेगा। तो अभी आप देख सकते हो क्लियरली कि वो रिट्रेसमेंट लेवल के जोन से बार बार टच कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा हमें ऑन RSI पे तो हमने देख लिया ओवरसोल्ड दिखा रहा है ऑन लाइक फ्यू टाइम फ्रेम्स, नॉट ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। अभी एक कंफर्मेशन और एक बाकी है जो कि हम फिबोनाची पे उसका देख रहे हैं। हमें DMI के हिसाब से तो हमें दिख रहा है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जो नीचे की तरफ जो जा रहा है, वो ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है DMI के बेसिस पे। बाइंग बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही है DMI के हिसाब से। जो एक चीज है वो अभी स्टिल कंफर्म ये नहीं हुई है कि फिबोनाची पे वो रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे जा भी रहा है या फिर वो वापस से रिट्रेस हो जाएगा। तो अगर थोड़ा टाइम और हम इसको ऑब्जर्व करें और 10 मिनट्स 5 मिनट्स में भी शायद हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब प्राइस यहाँ से रिट्रेस होने वाला नहीं है, या तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको देख समझ के अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी। अगर इनकेस वो रिट्रेस होता हुआ नजर आएगा, 0.7 तक भी छू के वो वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय पे इस जगह पर हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। इस जगह पर अगर वो पहुंच जाए तो ये वाली जब पोजीशन में वो पहुंच जाएगा, यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं। ये तब शायद उस समय पे वो RSI पर भी ओवरबॉट
ओवरसोल्ड की टेरिटरी में आ जाएगा कंप्लीटली, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ तक आने के लिए वेट करते हैं गाइस। मीनवाइल अगर आप लोगों ने मेरा लिंक यूज करके जीबिट को डाउनलोड नहीं किया हो, तो प्लीज गो एंड डाउनलोड जीबिट राइट नाउ, बिकॉज जीबिट इज एवरीथिंग दैट यू नीड राइट नाउ टू स्टार्ट योर क्रिप्टो जर्नी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि आपके पास सारा वो सपोर्ट सिस्टम है जो आपको चाहिए अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने के लिए। देयर आर पीपल हु आर देयर टू गाइड यू 24/7, मेंटोर यू, गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। हमारी 24/7 कस्टमर सर्विस टीम आपके लिए बैठी है यहाँ पर, आपकी सारे कंप्लेंट्स, आपके सारे रिड्रेसल्स को हैंडल करने के लिए। और हमारी लाइव स्ट्रीम टीम यहाँ बैठी है 4 to 8 आवर्स टू मेंटोर यू, टू गाइड यू कि आप अपने क्रिप्टो जर्नी कितने इजीएस्ट वे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लीज यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म फॉर दैट। एंड इफ इन केस यू नीड एनी टिप्स ट्रिक्स, यानी आप हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका हिस्सा बनकर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है मार्केट से रिलेटेड, वो भी इंफॉर्मेशन का आप हिस्सा बन सकते हैं और उससे भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन पाकर अपने सक्सेसफुल ट्रेड्स ले सकते हैं। गाइस, we are not financial advisors or investment advisors, but all we do is we bring you the best quality content. So please अपना research जरूर करें before you get on to trading on this platform. क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स में एक दिन में 20-20, 30-30% की भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। मतलब सुई एक ऐसी क्रिप्टो है जो बेसिकली 20-20, 30-30% की भी आपको वॉलेटिलिटी दिखाती है एक दिन में। 5% तो मतलब स्टॉक में आप देखते हो तो आप हिल जाते होंगे, पर इस मार्केट में तो 20%, 30% भी बहुत कॉमन है। तो अपने जो भी ट्रेड्स लें, काफी काफी चौकन्ना होके लें, काफी ध्यान से लें, ताकि आप बेसिकली ना अपना पैसा फंसाए नहीं। और अगर आप फंसा भी रहे हो तो मेक श्योर कि वो पैसा जितना भी आप लगा रहे हो वो दैट इज नॉट द ओनली मनी दैट यू हैव दैट स्पेयर मनी। और उसको अगर आप कंप्लीटली खो भी देते हो या फंसा भी लेते हो तो उससे आपकी नॉर्मल लाइफ पे कुछ जिंदगी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से अपनी प्लानिंग करें और इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट हो या आप अपना जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करो वो सोच समझ के करो। तो अभी आप देख सकते हो वो रिट्रेसमेंट लेवल से अगेन प्राइस वापस उठने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे फिर से बायर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्राइस रिजेक्ट होगा या प्राइस वापस से टेक ओवर कर लेगा, वो हमको अभी स्टिल अभी एनालाइज करना बाकी है। ये 15 मिनट्स का चार्ट में इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ आप लोग के व्यू के लिए। फिबोनाची इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूल गाइस, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लो ना, फिबोनाची में काफी कुछ छुपा है जो आपको आपका एक सक्सेसफुल ट्रेड देने के लिए बहुत बहुत आपको हेल्प करेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। आई ओपन द 31st डेटा। ओके, मैं यहाँ से रखती हूँ इसको। ओके, दिस इज गुड इनफ। ये व्यू ठीक है आप लोग के लिए। ओके, मुझे रिट्रेसमेंट लेवल्स देखने हैं एक्चुअली। Okay guys, so any questions for me, you can shoot a question for me in the comment section. अगर मेरी कोई भी बताई हुई बातें, कोई भी टिप्स ट्रिक्स आपके लिए काम करती है और आपके ट्रेड्स को ऑन अ डे टू डे बेसिस मेक्स योर लाइफ इजी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विथ ऑल द पीपल हु यू थिंक कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। आई वांट नॉट जस्ट यू गेटिंग बेनिफिटेड बट ऑल्सो ऑल द अदर पीपल जो भी आपकी कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली, उन सबसे ये स्ट्रीम्स शेयर करें। We want to make sure कि आप में से सब लोग, each one of you make as much money as possible। हमारी तो कोशिश यही है कि हम चाहते हैं कि आप लोग ढेर सारा पैसा बनाएं और हमारे प्लेटफॉर्म को भी यूज करते रहें ताकि आपको वो सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाए। लाइक यू गेट द सपोर्ट, यू गेट द
technical support, you get all the other information that you need so that आपकी क्रिप्टो जर्नी की लाइफ आसान हो, राइट? तो प्लीज 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 आपका प्यार मोहब्बत हमें आप ऐसे ही दिखा सकते हो, और दिखा ऐसे सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये स्ट्रीम्स को बहुत ज्यादा शेयर करें, मेरी लिंक शेयर करें प्लीज, जो मैंने आपको चैट रूम में दे रखी है। ये लिंक आप शेयर करेंगे विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो काफी मेहरबानी होगी आप लोग की कि वी आर यू विल बी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर all your future trading journey, and for all your future trading transactions and all of that. So please, 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 it's a request. Anything that I teach, anything that I talk, anything that I share my experience about, and if that's adding little value also, तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद एवरीवन। अगर वैल्यू ऐड नहीं करे तो मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगी, बट मैं हाँ डेफिनेटली आपसे फीडबैक जरूर चाहूंगी। आप लोग फीडबैक देते रहें, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, इट्स ओके, बट मुझे फीडबैक देने पर ना काफी क्लैरिटी होती है कि आप लोग ना क्या सोच रहे हैं, और जब आप लोग स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं तो आप लोग की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, थोड़ी एक्सपेक्टेशन जान लूँ ना, तो फिर मुझे ना वो टॉपिक्स पर बात करने और वो टॉपिक्स पर स्ट्रीम क्रिएट करने या फिर टॉपिक्स पर सेशन बनाने में आसानी होती है। अगर आप लोग की स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज लेट मी नो। बाकी मैं इतना ही कहूंगी कि ना ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना जिंदगी आसान होगी, जितना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाके आलतू फालतू की चीजें करोगे बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि ट्रेडिंग सीखने के चक्कर में बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स में भी घुस जाते हैं, बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स में घुस जाते हैं। गाइस इतने की जरूरत हमको नहीं है। हमारी लाइफ ना मतलब छोटे से 2 से 3 चीजों से भी ना सिंप्लीफाइड तरीके से हमारी लाइफ हो सकती है, और ट्रेडिंग हमारी सक्सेसफुल हो सकती है। इट्स जस्ट दैट आपको राइट गाइडेंस और राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। बहुत ज्यादा लाइक बोलते हैं ना कि टू मच इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी समटाइम्स हार्मफुल, तो ज्यादा भी चीजें जाके ओवर ना करें। ओवर भी करते हैं तो बाज वक्त क्या होता है ना कि आप एक फॉल्टी डिसीजन ले लेते हो। तो जितना इसको मिनिमलिस्टिक रखोगे ना, जितना आसान और सरल तरीके से इसको सीखने की कोशिश करोगे, आपको भी चांसेस बनेंगे कि ना आपके प्रॉफिट्स मतलब ना आप आसानी से पैसा बना सकोगे। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में जाओगे, शायद यू एंड अप गेटिंग स्टक फॉर नो रीजन। तो ये एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए गाइस। डोंट ओवर डू थिंग्स, दैट इज माई पर्सनल एडवाइस ऑन ऑल दीज थिंग्स। देखो अभी जैसा ही दूसरे क्रिप्टो, जैसे ही बिटकॉइन गिरती है तो दूसरे क्रिप्टोज भी गिरना शुरू हो जाते हैं। अभी बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आ गई है, 640 के आसपास कुछ ट्रेड कर रही थी, 140 के आसपास आ गई। इथेरियम भी थोड़ी सी गिर गई है, 3850 के अबव चल रही थी, अभी 800 पे आ गई। सुई भी गिर गई है। सारे के सारे एक साथ क्रिप्टोज गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। जो भी क्रिप्टो यूज करें आप, जो भी क्रिप्टो ट्रेड करते हो आप, बस उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखे ना। एवरी मिनट एवरी सेकेंड उसके नेटवर्क में हो क्या रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप रखोगे अपने पास, आपकी लाइफ काफी इजी होने वाली है। ओके, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इजीएस्ट वन। न्यूज से अपने आप को एक्वाइंटेड करें। 3-4 सिंपल चीजें हैं, वही फॉलो करनी है। कुछ ज्यादा इसमें चीजें तो है नहीं, लॉजिक तो है नहीं। बस 3-4 चीजें फॉलो करोगे और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। न्यूज को फॉलो करना है, कब न्यूज कौन सी आने वाली है, और अगर न्यूज कोई आएगी तो उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी नेगेटिव चीजें आती है, नेगेटिव चीजें नेगेटिव ही करके जाती है पूरी मार्केट को। तो ऐसे में बेसिकली इन्वेस्टर्स और दी ट्रेडर्स विल विड्रॉ मनी। बहुत लिक्विडेशन देखने को मिलेंगे जब भी कोई नेगेटिविटी आती है मार्केट में। तो
तो आपको अगर पता चल गया है कि रेट कट होने वाला है, तो रेट कट इज अ गुड न्यूज डेफिनेटली, बट रेट इंक्रीज होने वाला है करके आपको लगता है, या फिर टैरिफ्स आपको बढ़ने वाले हैं बोल के लगता है, या फिर कुछ ट्रेड वॉर हो रहा है, या फिर कुछ सडन कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, कुछ कहीं पे कोई वॉर हो गया, कुछ हो गया, तो ये जो भी नेगेटिव चीज होती है उससे यूजुअली प्राइस नीचे को आ जाता है। और जब वो अच्छा होने लगता है कुछ भी मार्केट में, तो उससे प्राइस ऊपर को चले जाता है। तो ये थोड़े छोटे छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, और फिर हमको अपने ट्रेडिंग के डिसीजन बेस्ड ऑन दैट बदलने होंगे। स्टॉप लॉस यूज करने की कोशिश करें बिगनर ट्रेडर्स को, मैं यही कहती हूँ, क्योंकि आपको अगर इन केस किस समय पे, किस टाइम पे, प्राइस पे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना नहीं पता है, तो फिर स्टॉप लॉस का यूज करना शुरू करें। मिनिमलिस्टिक स्टॉप लॉस रखें, जितना आप बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं उतना ही रखें, ओवर भी ना रखें। मतलब हर किसी का क्योंकि एपिटाइट अलग होता है, तो 0.5 किसी को ओके होता है, किसी को 1% होता है, पर कोशिश करें कि 1% से ज्यादा का लॉस लेने की ना कोशिश करें। स्टॉप लॉस हमेशा रखें, ताकि एक भी गलत डिसीजन हो गया, जैसे कि आपने मार्केट में अपनी पोजीशन ली और आपने देखा कि मार्केट ऊपर चढ़ने की जगह नीचे की तरफ आ गई है, तो ऐसे में फिर आपको क्या ऑल्टरनेटिव्स है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। या तो ऐसे में दो चीजें हो सकती है कि आप अपना अमाउंट एक साथ टोटली ना इन्वेस्ट करें, मे बी अलग अलग लॉट्स में उसको इन्वेस्ट करें, जिससे बेसिकली एक बार गलती हो गई तो दूसरी वाली उसमें गलती नहीं होगी। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाते हुए एवरी मंथ, सॉरी एवरी वीक, क्रिप्टो का प्राइस किधर जा रहा है देखते हुए उसको आप कम से कम प्राइस पे लेकर खरीद के रख सकते हैं, बट देन दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज ट्रेड, इट विल बी लाइक ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा, वो जो है आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाए, या फिर अलग अलग लॉट्स में खरीदे, या मल्टीपल लॉट्स में खरीदे, या जो भी आपको सही लगता है वो आप अपने हिसाब से करें। उसका मैं आपको कोई फॉर्मूला या कुछ बताऊंगी तो नहीं, दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, हाउ यू वांट टू टेक इट। तो इथेरियम को देख सकते हो आप, फर्दर नीचे जा रही है, सेलिंग प्रेशर बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो डीएमआई के इंडिकेटर पे, थोड़ा सा मैं डीएमआई को ऊपर करती हूँ। मैंने आपको एक पोजीशन, एक यहाँ पर ये जो मैंने ड्राइंग की है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर प्राइस नीचे उतरते उतरते इस लेवल तक पहुंच जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं इस जगह से कोई बाइंग पोजीशन मिल सकती है। आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम विच इज लाइक येस्टरडे 6 बजे के आसपास इसने 3680 पे इसने टच करने की कोशिश की थी, अभी 3798 पर है, तो ये स्टिल फर्दर नीचे जाने के इसके अभी चांसेस हैं। तो ऐसे में स्टिल पोजीशन लेना अभी थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि आरएसआई पे भी हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर अभी वो स्टिल ओवरसोल्ड जोन में नहीं पहुंचा है। जब तक वो ओवरसोल्ड जोन में नहीं पहुंचेगा तब तक हम पोजीशन लेने के लिए रेडी नहीं होंगे ऑन द लॉन्ग लॉन्ग टर्म। ओके, तो अगर आप अपनी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या फिर इसको अगर वन डे होल्ड करने की भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो होल्ड ऑन इज व्हाट आई कैन से, ताकि वो नीचे लाइक ओवरसोल्ड पे कंप्लीटली आ जाए, तब जाके आप अपनी पोजीशन बनाना। ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है गाइस, एडीएक्स आप देख सकते हो 33 पर चल रहा है, यानी जो डाउन ट्रेंड ये जो अभी फिलहाल चल रहा है वो क्लियरली बता रहा है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी नीचे जो प्राइस गिर रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल अगर आप पोजीशन लोगे भी ना, तो हो सकता है कि प्राइस और फर्दर नीचे को गिरे,
और आपको ये जो करंट प्राइस पे आप खरीदोगे स्टिल वो शायद आपके लिए एक्सपेंसिव होगा, तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि वेट कर लो to be able to get completely right kind of position. इसका जो 24 आवर्स का लो था, मैंने क्या बताया आपको, लो इसका 3683 इसका लो था, स्टिल 3797 पे चल रहा है। तो अगर प्राइस उसके लो तक नहीं पहुंचता है जो कि यहाँ पर उसने ये लो बनाया था, आपको इतनी अभी स्टिल विंडो बाकी है। रिमेम्बर यू स्टिल हैव दैट विंडो। ये जो मैं ब्रश से आपको बताऊंगी पॉइंट करके, ब्रश कहाँ गया मेरा, ये ब्रश से यहाँ से लेके, सॉरी नॉट, आई शो यू, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये इतना जो लेवल है, इसको अगर मैं स्केल पे मेजर करूं तो ये कितने परसेंट का मूव है देखो। अभी स्टिल आपको 3% का मूव है, ओके, क्योंकि ये लास्ट टाइम यहाँ तक छुआ था। स्टिल 3.23 नॉट 3, 3.23% का आपके पास स्टिल मूव बाकी है, जो कि आप वेट कर सकते हो टू बी एबल टू टेक। अगर ये डाउन ट्रेंड स्टिल स्ट्रॉन्गली कंटिन्यू होगा, जो कि राइट नाउ मुझे बहुत क्लियरली बता रहा है कि डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ, तो अगर ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करेगा बिल्डअप, तो ये जो इसने लास्ट टाइम जो कि कल के दिन जो इसने सपोर्ट क्रिएट किया है, हो सकता है वो वापस से वहां टच करे या फिर वो सपोर्ट लेवल को भी क्रॉस करके और नीचे की तरफ बढ़ जाए। इसीलिए मैं आपको अभी कोई पोजीशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर मेरा एडीएक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, मैं आपको बोलती कि पोजीशन ले लो, क्योंकि फिर प्राइस वापस से रिट्रेस हो जाएगा, प्राइस ऊपर वापस से बढ़ जाएगा। पर इस समय पे अभी पोजीशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी काफी सेल होंगे फिलहाल राइट नाउ, और हमारा फिबोनाची भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, हमारा डीएमआई भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। तो प्राइस और नीचे 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 जाएगा, हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में ही चलता रहे। तो जब तक ओवरसोल्ड जोन में हम नहीं आ जाएंगे, तब तक हम कोई बाइंग पोजीशन नहीं लेंगे। प्राइस यहाँ से फर्दर नीचे और जा सकता है अंटिल हमारा कंप्लीटली सिनेरियो चेंज हो जाए और हमें कंप्लीटली मतलब बायर्स कंप्लीटली टेक ओवर कर लें, तब तक हमारी पोजीशन नहीं बनती। वी स्टिल हैव टू वेट। यहाँ पे भी आप पोजीशन लोगे, हो सकता है प्राइस वापस से फर्दर और नीचे चले जाए। जो ये दो तीन जो लास्ट 3 लाइन जो कैंडल्स फॉर्म हुई है, जो स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल फॉर्म हुई है, वो बेसिकली कंप्लीटली क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एट द मोमेंट। तो लिक्विडेशंस हो रहे हैं, ऐसे में कोई पोजीशन नहीं बनती। फेक ब्रेकआउट से बचकर रहिए गाइस। ये कैंडल्स और इंडिकेटर्स कभी कभी बहुत फेक सिग्नल्स और फेक ब्रेकआउट्स देती रहती हैं। जब तक आप एक कैंडल फॉर्म होती है, आप फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन पर कभी भी अपना डिसीजन, अपना ट्रेड ना डिसाइड करें, क्योंकि उससे होगा ये कि कभी कभी एकदम से फेक सिग्नल निकल जाएगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम यही होगा कि पैसा फिर से आपका फंस जाएगा। तो दो एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 कैंडल फॉर्म करने का इंतजार करें, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा। यूजुअली जब तक 2 कैंडल मिनिमम फॉर्म नहीं होती है, तब तक एक क्लैरिटी नहीं आती है, तो बेटर है कि होल्ड कर ले। देखो प्राइस रिजेक्ट हो रहा है इस लेवल पे, आपने देखा कि थर्ड वाली जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बना रही थी, पर प्राइस ऑलमोस्ट रीच टिल 0.618 लेवल तक पहुंच ही पा रहा था, उसने फिर रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ वो लेके जा रहा है। हमारे पास अभी सिर्फ 2 और जोन्स है। अगर ये 2 जोन्स में से बेसिकली ये यहाँ हिट कर जाएगा ना, फिर प्राइस को ऊपर उठने के लिए बहुत मुश्किल होगी। बट ये
ट्रेड पोजीशन लेने के लिए हेल्प करता है, बट ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी आप देखोगे, और ये मेरे एक्सपीरियंस में भी हुआ है, कभी कभी प्राइस फिबोनाची के वन लेवल तक भी पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी वापस से वो ना उठ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इस लेवल पे प्राइस ने एक अच्छी पकड़ ले ली हो, और यहाँ से बायर्स को लगता है कि ये राइट प्राइस है फॉर बाइंग, और वहां से डिमांड आपको बढ़ती हुई नजर आ जाएगी, एंड सडनली इस लेवल पे भी वो रीच करके बाज वक्त ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा कोई श्योरिटी कभी कभी होती नहीं है। कोई कोई सिनारियोज में ऐसा भी होता है कि बाज वक्त वो वन पे आता है, लेकिन फिर वो वहां से ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। इट्स ग्रेट, लाइक इट्स अ ह्यूज ओशन ऑफ थिंग्स जो बेसिकली हमको देखना पड़ता है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। अभी यहाँ से पेक आउट हो रहा है। अभी यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आ रही, सेलिंग हुई, सेलर्स ने यहाँ तक पुश करने की कोशिश की। अब बायर्स हावी हो गए हैं, बायर्स यहाँ से प्राइस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कैंडल के बेसिस पे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि बेसिकली ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो गया है करके, नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो अभी भी आपके डीएमआई पे ना बाइंग जो प्रेशर है वो 7 पे चल रहा है। तो स्टिल अभी बाइंग कंप्लीटली आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, यानी ये डाउन ट्रेंड अभी स्टिल बहुत ज्यादा ही हावी हुआ है। सेलर स्टिल स्ट्रॉन्ग है, sellers are not at all giving up at the moment। तो एक कैंडल के बेसिस पे मत डिसाइड करें। ये कैंडल फेक आउट भी कर सकती है, फेक सिग्नल भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, बायर्स को नीचे ला दे। देखिए जैसा अभी अभी हो रहा है ना, यू कैन सी सेल, बेसिकली सेलर्स ने फिर से बायर्स को गिरा दिया है, यानी बेयर्स ने बेसिकली टेक ओवर कर लिया है बुल्स को। बुल्स वर ट्राइंग टू पुल इट अप एंड बेयर्स हैव एक्चुअली टेकन इट ओवर। ये 15 मिनट की कैंडल्स पे हो रहा है ये सब कुछ। तो ऐसी वाली ट्रेड्स में ना टाइमिंग को काफी टाइम करके रखना पड़ता है। अगर आपको जैसे 5-10 मिनट के अंदर अंदर कोई ट्रेड लेना हो, जैसे अगर आपको मैंने आपको एक बताया था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स की या वेल एक्टिविटी की आप इंफॉर्मेशन रखते हुए कैसे आप अपने ट्रेड को टाइम कर सकते हैं, पर बहुत रिस्की मैटर होता है ऐसे में। कभी कभी वो बढ़ती हुई कैंडल के साथ आप अपना ट्रेड लेकर काफी सक्सेसफुल ट्रेड बना सकते हो, पर रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। बेटर है कि अगर आप नए नए इस इंडस्ट्री में घुस रहे हो, तो बेटर है कि लॉन्ग पोजीशन ले लो। जब टोटली ओवरसोल्ड हो जाएगा तब आप मार्केट में एंटर करो, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठो, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
These all can be strong short positions, guys. यहाँ पर आप यहाँ से आपको बस शॉर्ट के पोजीशंस बन रहे हैं, मतलब अगर आपको सेल करना हो तो ये पोजीशंस में आप सेल कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। अगर आपने प्रीवियस कोई पोजीशन ले रखी हो तो ये स्ट्रॉन्ग सेल पोजीशन है, पर बाय की कोई अभी भी पोजीशन नहीं बनी है, तो हमको वेट करना पड़ेगा until and unless the scenario completely changes. So with that, as I'm actually heading towards a 5 to 10 minutes of little break that I want to, मैं पिछले 1 hour 45 minutes से continuously streaming कर रही हूँ, तो I will be taking a small 5 to 10 minutes of break and I'll join you guys. यहाँ पर मैं एक small arrow लगा देती हूँ कि आप इसमें सेल कर सकते हैं, पर short positions बन सकती है for sell, but it is not, definitely not a buy position. So वो आपकी मर्जी, अगर आपने पिछली बार खरीद रखा हो जो भी प्राइस पे, तो आप लोग की इन सारी कैंडल्स पे जो जहां भी रेड कैंडल्स दिख रही है वहां पर आप अपना सेल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, ओके। पर कमिंग टूवर्ड्स द बाय, स्टिल देयर इज नो बाय पोजीशन एट द मोमेंट, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स स्टिल बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी कोई भी लेवल रीच नहीं हुआ है जहां पर आप अपना बाय पोजीशन लगा सकते हैं। तो गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes. होल्ड ऑन until I get back. And if anything that you're seeing in this videos streams and you're finding anything useful, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, और प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद एवरीवन हु यू थिंक कैन बेनिफिट आउट ऑफ दीज स्ट्रीम्स। एंड मेक श्योर कि आप मेरा लिंक इस्तेमाल करें टू डाउनलोड द ऐप and use this platform as much as you can so that you can make successful trades। और मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है और कुछ भी चीज आपके लिए काम करती हो, तो प्लीज 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 प्लेटफॉर्म को ढंग से और तरीके से इस्तेमाल करके अपनी सक्सेसफुल ट्रेड्स लें, ओके। होपफुली आई सी यू इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes. Until then, trade safely guys, trade safely। अभी बाय पोजीशन नहीं बनी है, ओके।
So guys, thank you for staying tuned. Thank you for joining in. I'm so sorry to keep you guys waiting in case you have waited for long. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पर वो अभी तक रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर चल रहा है. तो at this moment we are still not having any buying position. मैं समझी थी कि मैं ब्रेक पर जाकर आऊंगी तो शायद पोजीशन बदल जाएगी. Probably next 5-10 minutes शायद बाइंग प्रेशर बिल्ड अप हो जाएगा जिससे बेसिकली चीजें बदल जाएगी. बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन दैट वे. दैट्स ओके. So there's a candle that's forming, but could be a fake signal. So hold on till we are having some, like हमें कुछ green candles बनती हुई जब तक नजर नहीं आएगी तब तक we are not going to go there, okay? क्योंकि कभी कभी कैंडल्स फॉर्म होती है फिर वो फेक सिग्नल देती है और फिर बड़ा मुश्किल कर देती है. तो होल्ड ऑन टिल वी आर कंफर्म्ड कि बाइंग प्रेशर कंप्लीटली बिल्ड अप हो रहा है तभी हम एंटर करेंगे. हमको जब सब लोग खरीद रहे हैं और बहुत बाइंग प्रेशर आ रहा है उसी समय हमें ट्रेड लेना है. जो सेलिंग प्रेशर वीक है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाइंग प्रेशर बहुत वीक है उस समय पे ट्रेड नहीं लेना है.
Still, there is no strong buying position at the moment, guys. So hold on, hold on. Ethereum is one of the very, lucrative projects founded by Mr. Vitalik Buterin, if you know him. तो आपको पता ही होगा कि इथेरियम की हिस्ट्री, इथेरियम का यू नो यूसेज एंड एवरीथिंग. So इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल मनी. मैं काफी लोगों को बोलती रहती हूँ, एंड टू ऑल माई यू नो क्लोज पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली में भी, रिलेटिव्स में भी, सबको बोलती रहती हूँ कि अगर आपके पास पैसा हो, मतलब अगर पैसा ना हो तो शायद छोटे क्रिप्टोज उठाना इज ओके, बट अगर आप के पास ठीक ठाक पैसा हो तो बेटर है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा डालो जिसमें बेसिकली रिटर्न जल्दी बनने को मिले, राइट? तो इथेरियम इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ कैटेगरी, काइंड ऑफ cryptos, so basically a digital, that is just not about, ethereum is not just digital money, it is basically, it is a backbone of decentralized apps, nfts and defi. मतलब इस particular technology पर इतनी काफी सारी चीजें बनाई जाती है जो कि बेसिकली आपको अंदाजा भी ना होगा, क्योंकि इस पर एनएफटीज बनाई जाती है, डिसेंट्रलाइज एप्स बनाई जाती है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इस पे किया जाता है. तो इथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, प्लीज ये अंडरस्टैंड करें. और मैं क्यों बार बार इसको एनकरेज करती हूँ, क्यों मैं इसको सबको बोलती हूँ कि यार इथेरियम में डालो पैसा, इथेरियम में डालो, क्योंकि इट इज बेसिकली एक जैसे अगर मैं एक आम भाषा में इसको समझाऊं तो ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है. यानी ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर काफी कुछ चीजें बिल्डअप है. जैसे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप आपका ये लैपटॉप चल रहा हो या फोन चल रहा हो, तो उसमें क्या है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? यू हैव समथिंग कॉल्ड एज जो जैसे एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर कितनी काफी चीजें बनी हुई है, राइट? वैसे ही इथेरियम इज बेसिकली लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्स बनी हुई है, एनएफटीज बने हुए हैं, डीफाई बना हुआ है, और वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को ना, मतलब इट्स काइंड ऑफ फ्यूलिंग अप, मतलब वो दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे यूनिस्वैप हो गया है, ओपन सी या आवे, ये सारे प्रोजेक्ट्स को भी ये बेसिकली मतलब हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग एज सच. तो इथेरियम इसीलिए इतना फेमस है, इतना उसमें ग्रोथ क्यों देखी जाती है, और या फिर इतनी ज्यादा उसमें अडॉप्शन क्यों देखी जाती है, इज बिकॉज ऑफ दिस. Second thing is obviously Ethereum, because every transaction that it generates, it kind of burns a part of it like as a transaction fees. तो जो जो इथेरियम जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उसकी सप्लाई उतनी ही कम होगी, जिससे वो बेसिकली फ्यूचर में उसके प्राइस के प्राइस बढ़ने के काफी चांसेस बन जाते हैं. आपको जैसे इकोनॉमिक थ्योरी पता ही है कि as the supply of it is limited, the demand for it is going to grow. तो ये जो बिटकॉइन के साथ भी आप देखते हो कि every 4 years बिटकॉइन goes for halving method. If you have heard of this terminology called halving मतलब वो basically अपने रिवॉर्ड्स को हाफ कर देती है एवरी 4 years. तो जो सप्लाई जो अवेलेबल होती है इन द मार्केट, दैट कंप्लीटली गोज फॉर अ मतलब वो ना वो रेड्यूस हो जाती है. तो उससे सप्लाई कम होने से, डिमांड ज्यादा होने से बेसिकली प्राइस बढ़ने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक डिफ्लेशनरी प्रोडक्ट, मतलब डिफ्लेशनरी एसेट या डिफ्लेशनरी प्रोडक्ट बन जाता है. तो ऐसे में these kind of projects gain a lot of momentum and a lot of क्या कहते हैं, ये डिमांड में काफी आ जाते हैं ऐसे समय पे ना.
तो इसकी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी क्रिप्टो का, आप याद रखें। जितना ये क्रिप्टो मार्केट में सप्लाई होती रहेगी वो उतना ही मतलब उसकी अगर डिमांड नहीं होगी तो उसका प्राइस काफी नीचे रहेगा। लेकिन अगर कोई भी क्रिप्टो बेसिकली बहुत डिमांड होती रहेगी और वो बेसिकली सप्लाई में भी एट द सेम टाइम कम होती रहेगी, तो वो डिफ्लेशनरी इफेक्ट जो रहेगा ना उसके प्राइस को बहुत आगे बढ़ाएगा। तो हमें ऐसा ही कोई ऑप्शन चाहिए, राइट, जहां पे हमें काफी मोमेंटम देखने को मिले, या फिर हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिले, जिससे हम मतलब इवेंचुअली जल्दी जल्दी लाइक लाइक क्या कहें, कैसे कहूं मैं, इट्स लाइक जितना उसमें आप वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगा उतना ज्यादा बाई सेल आप उसमें कर पाओगे, और उसमें आपको मोमेंट ज्यादा दिखने देखने को मिलेगा, तो फिर आपको लाइक यू कैन डू द ट्रांजेक्शन एज क्विक एज पॉसिबल। उसमें पैसे फंसने के चांसेस कम होते हैं, या फिर इफ द वॉलिटिलिटी इज नॉट देयर, मतलब if the volatility is there, then buy sell काफी आसान हो जाता है। तो those kind of things are something that we need to look at. Another thing is Ethereum, because it has moved from energy hungry mining to proof of stake, तो पावर जो यूज होता है वो ऑलमोस्ट 99.9% उसका रिड्यूस हो चुका है। तो क्योंकि वो अभी राइट नाउ स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और यील्ड जनरेटिंग वाले भी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, तो इथेरियम ने बेसिकली काफी कुछ on the power side of it and proof of stake side of it basically has reduced it by like 99.9%. That also adds as a great value. Or because of the layer 2 ecosystem and scalability, like roll-ups like Arbitrum, Optimism, and Base, जो है Ethereum is solving the classic crypto dilemma, high fees versus speed, and it's also building a scalable multi-chain empire, and Ethereum is still the fuel for all of it. तो ये स्केलेबल प्रोडक्ट है जिसमें काफी कुछ मतलब चेंजेस लाए जा सकते हैं। इसमें काफी कुछ स्पीड हो गई या फिर फीस हो गई, ये सारी चीजों में मतलब इट कैन एक्चुअली solve a lot of crypto problems right now. So because of which also it adds a lot of value, and it is definitely a go-to kind of a crypto, not just a crypto, ये मतलब एक डिजिटल करेंसी नहीं है, ये ओवरऑल टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली बहुत ज्यादा नॉट जस्ट फॉर नाउ बट कमिंग इन लाइक इन फ्यूचर ऑल्सो, इस पर जितने भी एनहांसमेंट्स या जो भी स्केलेबिलिटी होगी वो काफी कुछ विल ब्रिंग अबाउट ग्रेट ग्रेट काइंड ऑफ क्या कहते हैं ना रिजल्ट्स एज सच। तो ऑब्वियसली हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि इथेरियम सिर्फ क्रिप्टो लवर्स एक रिटेल साइड में एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, पर बल्कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो बेसिकली जैसे ब्लैक रॉक हो गया है, फिडेलिटी हो गया है, ये आप देख सकते हो कि दे आर ऑल क्रेजी अबाउट इट। अभी काफी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इथेरियम में। ब्लैक रॉक ने काफी कुछ मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है इन इथेरियम, फिडेलिटी ने किया है, और फिर ये बेसिकली टोकनाइज्ड एसेट्स में इसका यूसेज होता है, सीबीडीसीज, आरडब्ल्यूएस, रियल वर्ल्ड एसेट्स, एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में बेसिकली इथेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है टू बिल्ड अप समथिंग ऑन इट। यानी उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर एनएफटीज क्रिएट किए जाते हैं, करेंसीज क्रिएट जाते हैं, सीबीडीसीज क्रिएट किए जाते हैं। तो बेसिकली जो एक चीज स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन के बाद, अगर कोई एक टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी टू काइंड ऑफ गिव इट अ काउंटरफीट, इट हैज एक्चुअली गेन्ड अ लॉट ऑफ मोमेंटम आफ्टर all these infrastructure that's being built upon it, and that's the beauty of it। मतलब जितना आपको कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी बेटर करके कोई चीज दे सकती है, फ्रॉम द वे इट यूज टू हैंडल टू वे इट इज हैंडलिंग राइट नाउ, दैट इज व्हाट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो आप लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें, आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आने ही आने हैं।
आप लोग को मैं बार बार क्यों कहती रहती हूँ कि डोंट जस्ट गेट इनटू एनी क्रिप्टो, एनएफटीज में नहीं जाए, क्यों एनकरेज करती हूँ, या फिर मीम कॉइन्स में ना जाए, क्यों एनकरेज करती हूँ, क्योंकि इनके पीछे कोई प्रॉपर फंडामेंटल्स छुपे हुए नहीं है। अगर ये क्रिप्टो सडनली गायब हो जाए फॉर सम रीजन, पंप होकर सडनली डंप हो जाए, तो आपका पैसा रिकवर होने के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट्स लाइक इथेरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, सोलाना हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजीज में पैसा डालेंगे, तो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जितना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आएगा, जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा, उतना आपके पैसे को भी, आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो दिस इज द रीजन मैं आपको बार बार एजुकेट करती हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो नहीं कर रही, ना ही मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस कर रही हूँ, बट मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रोजेक्ट वर्सेस एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी को आप उठाकर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उन दोनों में से कौन सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज वेरी क्रूशियल एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज अपने नॉलेज लेवल्स को बढ़ाएं, अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, और जो प्रोजेक्ट आपको बेस्ट सूटेबल लगता है, जिसका फ्यूचर हो, भले ही आपने आज पैसा लगाया, गलत भी लगा दिया और पैसा फंस भी जाए फॉर वट एवर रीजन, गलत ट्रेडिंग कर दी, गलत आपने डिसीजन ले लिया, आपको इतनी बात की तो श्योरिटी और गारंटी होगी कि पैसा फंस भी जाए फॉर सम रीजन, मेजर स्मॉल माइनर पुल बैक की वजह से, तो वापस से पैसा रिकवर भी हो जाएगा। तो डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट, एंड देन यू कैन ब्लाइंडली ब्लाइंडली इन्वेस्ट इनटू थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हूँ और मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। शायद आपके लिए भी ये सोच और ये मेरी एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें काम आए, तो शायद आप लोग भी बेटर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। तो डू दिस फॉर मी एंड ट्राई रिसर्चिंग मोर एंड मोर। काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है ये, काफी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, काफी कुछ बिल्डअप होते रहता है इस पे, नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप होते रहते हैं, नए नए एप्स डेवलप होते रहते हैं, लाइक पेमेंट सोल्यूशंस व्हाट नॉट, लाइक एनएफटीज डेवलप होते रहते हैं, कई क्रिप्टो करेंसीज इस पर बिल्डअप होते हैं। इथेरियम पे शायद मेरे ख्याल से यूएसडीटी को भी माइनिंग की जाती है, लाइक बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग भी इस पर होती है। तो यू कैन इमेजिन कि इसका कितना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। तो ऐसे में आपको ये प्रोजेक्ट को पिकअप करना चाहिए या नहीं चाहिए, दैट इज योर कॉल टोटली। तो गाइज आप अभी देख सकते हैं, जैसे मैं आपको पिछले थोड़ी देर से, ऑलमोस्ट मैं आपको 1 आवर से बता रही थी कि प्राइस फर्दर डाउन जा सकता है, और वो आपको देखने को मिल रहा है। हमारा ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, प्राइस फर्दर डाउन हो रहा है, सेलिंग प्रेशर वापस से बिल्ड हो रहा है, बाइंग प्रेशर बहुत वीक है। बेसिकली मैंने आपको बोला था कि प्राइस जब तक फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं वो रिट्रेसमेंट लेवल्स के नीचे, मतलब लेवल से ऊपर की तरफ नहीं पहुंचेगा, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। और हमारी जो भी प्रिडिक्शन थी, हमारी जो भी एनालिसिस थी, वो काफी सच हुई। आप लाइव देख सकते हो कि प्राइस फर्दर डाउन जा रहा है। ऐसे में अगर आपने अभी ट्रेड ले लिया होता तो आपको कोई खास प्रॉफिट कुछ होने वाला तो था नहीं। तो आप देख सकते हो कि प्राइस फर्दर डाउन जा रहा है और नीचे जाएगा, जब तक के बेसिकली ट्रेंड आपका वीक होते नजर नहीं आएगा, तब तक आपको कोई बाई पोजीशन नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी जस्ट ये दो इंडिकेटर्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू पुट इट एज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इंडिकेटर्स टू। मैं फिबोनाची को हटा दूंगी थोड़ी देर में, डीएमआई को भी हटा दूंगी, एंड आई माइट कीप आरएसआई डाइवर्जेंस एंड एमएसीडी टू, एंड देन लेट्स सी के कोई सिनेरियो बदलता है या फिर हमें कोई बाई पोजीशन मिल सकती है या नहीं, बेसिस द अदर इंडिकेटर्स दैट वी हैव, and then we'll decide on to what needs to be done. Okay, till then you guys keep watching, and अगर कहीं से भी मिस हुआ हो तो प्लीज स्ट्रीमिंग को थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लें, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपको मुझसे पूछना हो ऑन द स्ट्रीम, प्लीज आस्क मी, यू कैन फील फ्री टू क्वेश्चन मी एनीथिंग। आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी स्टक होते हो आप अपनी ट्रेडिंग करते वक्त,
तो मुझसे आप कुछ भी बात पूछ सकते हो। प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। ओ, मैं कॉफी ना, आई हैव पुट टू मच ऑफ क्रीमर आई गेस। बहुत मेरी मीठी सी हो गई है कॉफी, कड़वी जाके। ये जितना भी जोन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये पूरा आपका शॉर्ट सेल का जोन है। अगर आपने यहाँ भी शॉर्ट सेल किया होता, यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब ये आप पूरा देख रहे हो कि अभी ये ना डाउनवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका फर्स्ट अगर शॉर्ट सेल आपने करना हो तो आपका शॉर्ट सेल यहीं से शुरू हो गया है। ओके, क्योंकि प्राइस उसके ऊपर तो पहुंचा नहीं है, तो यहाँ से आपका शॉर्ट सेल शुरू हो गया है। ये तो सब्जेक्टिव टू पीपल होता है गाइस। अब जैसे आपको टेक प्रॉफिट कौन से लेवल पे करना है, वो तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि आपको कौन से लेवल पे करना चाहिए। वो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि सब लोग अपने अपने टारगेट्स फिट करके रखते हैं। यूजली जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:3 हो तो ठीक होता है। यानी 1:3 यूजली इसलिए कहते हैं कि 1% अगर आपने, मतलब 1% आपने कुछ लगाया हो, तो आप उसके 3 गुना एटलीस्ट आप उसका रिवॉर्ड निकाल सके ना। तो वो एक लाइक माइंडसेट होता है ऑफ अ ट्रेडर, कि 1 गुना पैसा लगाया तो एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 गुण, लाइक मर्तबा यानी दफा आप उससे रिवॉर्ड निकाल पाओ। वो एक मेंटालिटी होती है, लेकिन बट वो भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई कोई लोग 1:2 पे भी रखते हैं, कोई 1:3, कोई 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 लोग उससे ज्यादा भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। वो सब्जेक्टिव टू पर्सन होता है। कोई कोई लोग मतलब डे ट्रेडिंग नहीं करते, उनको लॉन्ग पोजीशंस लेके लंबे समय तक होल्ड करना पसंद आता है। तो फ्यू पीपल दे कीप इट फॉर डेज टुगेदर, ताकि वो डिजायर्ड जो भी वो लोग देख रहे हैं, जैसे हो सकता है कि आज की तारीख में अगर आपने कोई टारगेट रखा हो और वो टारगेट आज नहीं अचीव हुआ, वो कल या परसों अचीव हुआ हो, तो देर आर पीपल हु डज दैट एंड आई ऑल्सो डू समटाइम्स लाइक दैट, कि मैं कभी कभी मुझे सेम डे अगर वो प्रॉफिट होते हुए नजर ना आए, तो मैं उसको और 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए होल्ड कर लेती हूँ, अज्यूमिंग के फिर प्राइस यहाँ से जो भी उसने प्रीवियस हाई बनाया था उससे फर्दर और हाई बनाएगा, और लंबा मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेती हूँ। पर क्योंकि इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बहुत लगी होती है, नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट आवर क्या होगा, ये एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन होती है। तो ये तो आपको मतलब अपने रिस्क एपेटाइट और अपने हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कमिंग फ्यू डेज आपको कंफर्म्ड न्यूज हो कि मतलब पॉजिटिव होने वाला है फॉर वट एवर रीजन, क्योंकि एक अच्छी न्यूज आने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये वजह से आपने होल्ड करके 2-3 दिन उसको रख लिया हो। या फिर हो सकता है कि अगले घंटे में ही कुछ बदल जाए, विच इज वेरी मच पॉसिबल। तो दोनों एस्पेक्ट्स है, 50-50%। अगेन प्रोबेबिलिटी जो हमने मैथ्स में पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी का जो खेल होता है 50-50% ही होता है। तो वो आपको एक चीज ध्यान में रख के करनी पड़ेगी। वैसे तो अगर आप डे ट्रेडिंग में अगर आपने एक पोजीशन लेके निकाल भी दी, तो शायद मिनिमल प्रॉफिट के साथ आप डे में एग्जिट मार भी लो, लेकिन हो सकता है फिर से आपको कल एंट्री लेनी पड़े। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द एफर्ट के कल फिर से एंट्री लेनी है एंड ऑल दैट, उसको लंबे समय तक होल्ड करके रख लो, तो शायद उससे ज्यादा बेटर का प्रॉफिट हो जाए। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी 50% चांस की है। तो ये एक सोच समझ कर मतलब फैसला करना चाहिए आप लोग को। कभी कभी वो स्ट्रैटेजी काम कर जाती है, जैसे 2-3 दिन कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर चली गई, आपने 2-3 दिन होल्ड कर लिया, तो हो सकता है कि अच्छी खासे प्रॉफिट पे आप एग्जिट मारो और आपको बार बार एंट्री लेना ना पड़े। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, लाइक सडनली नेक्स्ट आवर मार्केट गिर गई फॉर वट एवर रीजन, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, तो वो मुश्किल में आप आ सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि 0.5 लेवल पे फिबोनाची के रीच कर गया है प्राइस, उसके नीचे और फर्दर जा रहा है 0.61।
0.78। ऐसे में सेलिंग प्रेशर विल कंटिन्यू टू बी ऑन द हाई, या फिर कुछ भी मोमेंटम बदलता है, ये एक क्रूशियल पॉइंट है गाइस। हमारे इंडिकेटर्स के हिसाब से तो सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रांग है राइट नाउ। जो ये डाउन ट्रेंड फॉर्म हो रहा है ये बहुत स्ट्रांग है और ये कंटिन्यू टू बी लिटिल स्ट्रॉन्गर। दैट इज व्हाट इट इज इंडिकेटिंग एज ऑफ नाउ राइट अवे। बट नेक्स्ट 10-15 मिनट्स 30 मिनट्स ये सिनारियो अगर कुछ भी बदलता है तो फिर ये टोटली अलग चीज हो जाएगी जो हमें देखनी पड़ेगी। गाइज एनीबडी इन द स्ट्रीम कोई क्वेश्चन करना चाहता हो तो फील फ्री गाइज, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। Anybody would like to ask me a question, please feel free. Anybody that would like to ask me a question, please.
Guys, selling pressure is still very, very strong. At this moment, too, it's still not um, giving any strong indication about any buying position. आप खरीद भी लोगे तो कुछ काफी फायदा होने वाला है नहीं, तो प्लीज no use of buying at this current levels. So इथेरियम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हर पॉइंट में बेसिकली इथेरियम फिट होता है, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे वो लॉन्जेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या इफ आई टॉक अबाउट इट्स इकोसिस्टम और इफ आई टॉक अबाउट इट्स इंटरऑपरेबिलिटी, या फिर उसका इकोनॉमिक डिजाइन हो गया, या फिर उसको जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल लव एंड अडॉप्शन मिल रहा है फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, बेसिकली इथेरियम इज स्टैंडिंग लाइक इट्स एन आउटस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर श्योर. तो most decentralized smart contract chains are very much secured, very much there on Ethereum platform itself. So security aspect of it very much like I can say 4 or 5 or something 4.5 like that. आई नो के रिसेंट अब आप मुझे ये बोलोगे कि रिसेंट बाइबिट पे 4 मिलियन की इथेरियम हैक हुई थी एंड ऑल ऑफ दैट, बट
इथेरियम हैक भी हुई, वापस रिकवर भी हो गई, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं कह सकते कि इथेरियम इज इन एनी वे अनसिक्योर्ड और इट्स नॉट सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म और समथिंग। वो हैकर्स जो भी जिस भी चीज को उन्होंने हैक कर लिया है, उस वो बेसिकली उन्होंने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को हैक किया है। लेकिन इथेरियम एज सच जो बेसिकली एक क्रिप्टो है, उसको जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो स्टिल इट स्टैंड्स वे अबव देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज हैक भी हुआ है तो भी वापस रिकवर हो चुका है काफी कुछ, एंड it stands still to where it is, no matter the bad people try to spoil its name or whatever। काफी टाइम तक उसको मतलब नेगेटिविटी में देखा गया था, लेकिन वापस से फिर से उसकी इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ हो चुकी है ना कि मतलब लोगों ने उसकी बुराइयों को मतलब भूल ही गए हैं काफी हद तक, राइट। And coming towards the longevity, if I talk about, it does have a longest proven track record in DeFi and NFTs, if I talk about. So from that point of view too, basically it has been like since ages, it has been having great amount of track record, like चाहे वो NFTs से related हो गया या कोई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस उसके ऊपर बिल्डअप होते हुए नजर आया, तो वो लॉन्जेविटी जो उसने मेंटेन की है वो भी काफी कमेंडेबल चीज है। अगर उसकी इकोसिस्टम के बारे में हम बात करें तो इट इज लार्जेस्ट डेवलपिंग प्लेटफॉर्म, बेसिकली द डी एप्स, द डिसेंट्रलाइज्ड एप्स एंड यूजर बेस दैट इट हैज, डेफिनेटली वर्थ वाउचिंग फॉर, डेफिनेटली वर्थ डिस्कसिंग फॉर। तो वो बेसिकली एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, तो वो भी बेसिकली बहुत वैल्यू ऐड करता है। चौथा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इंटर ऑपरेबिलिटी उसका जो है, यानी इट एक्ट्स एज अ बेस लेयर फॉर डजन्स ऑफ लेयर टूज एंड ऑल्ट कॉइन्स जो भी लेयर टू डेवलप हो गए हैं ऑन ऑल दिस। ये मेजर जो मतलब जो इसने लेयर वन टेक्नोलॉजी ये था, जो इसके ऊपर जो काफी कोई चेंज मतलब चीजें डेवलप हुई है या अपग्रेड्स हुए हैं या इसके ऊपर कुछ भी बिल्डअप किया गया, तो ये ओवरऑल एज अ लेयर वन हमेशा से था, है और रहेगा। तो ये एक बेस लेयर था, it continue to be, तो वो भी वजह से it becomes very very important and becomes a very crucial project, honestly speaking। Coming to economic design of it, we all know, like same like Bitcoin, it has the same deflationary aspect related to it, means that the transaction, once they get validated or once they they kind of have this burning mechanism जहाँ पे supply को basically shorten कर दिया जाता है, जिससे उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है over a period of time, so that adds a lot of value too। So I think the deflationary aspect to it is very very important for it to kind of keep growing, क्योंकि जितना सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी उतना ही वो प्राइस उसका आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक्सेप्ट होता हुआ नजर आएगा, और उससे काफी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एंड उस सारी चीजों की चीजें बहुत बन जाती है। और क्योंकि इथेरियम आल्सो गिव्स यू yield bearing capacity and staking rewards and all of that, that also adds a lot of value to it। other than that, we all know कि institutional adoption काफी हो रही है, only L1 besides BTC getting ETFs, जो basically ethereum है side on the side with बिटकॉइन, जो काफी ईटीएफ्स आपको हर जगह उसकी फाइलिंग्स होती हुई नजर आ रही है और काफी कुछ अडॉप्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ग्रो हो रहा है। तो उसका जो फाउंडेशन है ना, द वेब3 इकोनॉमीज का जो बेसिकली फाउंडेशन, वो इट्स काइंड ऑफ it's pumping faster, as well as it is basically remaining as the foundation for all the entire web3 economy, and definitely it has a lot of prospect, a lot of potential for future। that's why it kind of is growing and will continue to grow। तो अगर आप इथेरियम में जाने का सोच रहे हो या सोचते हो तो आप कोई गलत फैसला नहीं करोगे, यू विल नॉट रिग्रेट।
डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रोजेक्ट एंड इट विल कंटिन्यू टू बी अ गुड प्रोजेक्ट। तो इसको ये नहीं सोचता कि जस्ट एक बेसिकली ना, इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी, इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आप एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जितनी इसमें डेवलपमेंट आएगी, जितना आगे चल के ये ग्रो करेगा, जितना कुछ इसके अंदर चेंजेस आएंगे ना, वो बेसिकली आपको आपके मनी को डबल या ट्रिपल या 5x करके ही देगा। तो डोंट वरी, आप मतलब आप सही प्रोजेक्ट में जा रहे हो, आप सही टेक्नोलॉजी, आप सही क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हो। तो while whatever things that I said and discussed are all for informational purpose, and I also want you guys कि थोड़ा सा रिसर्च आप अपनी तरफ से भी करें ना। और ज्यादा पैसा हो तो इथेरियम इज द वेरी बेस्ट 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 ऑप्शन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई नो जो प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है देखने में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा यार, 3 साढ़े 3 हजार डॉलर, मतलब $4,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है करके आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन इट्स ओके, इट्स वर्थ दैट। ये प्रोजेक्ट मतलब आप ना मतलब गलती नहीं कर रहे हो अगर आप इसमें जा रहे हो तो। हाँ, जरूर ये चीज है कि किस समय पे एंटर कर रहे हो, किस समय पे एग्जिट करते हो, और फिर क्या प्राइस पे खरीदते हो, ये कुछ क्रूशियल चीजें हैं जो अगर आपने सीख ली, जो कि बहुत काफी आसान है। दो तीन चीजें ही हैं जो ऑन एंड ऑनगोइंग बेसिस हमें थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना है। वो आपने चीजें सीख ली तो बेसिकली आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और आप एक सक्सेसफुल ट्रेड ले लोगे एवरी डे। बाकी कुछ समझ में नहीं भी आता है तो लो और हाई को बस मेजर कर लेना, 5 डेज का मूविंग एवरेज निकाल लेना, और आपको एक रेंज मिल जाएगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस प्राइस पे उसे आज की तारीख में खरीद सकते हो। सिंपल सी मेथडोलॉजी है, सिंपल सा खेल है। वो भी नॉर्मल सी चीजों को मिनिमम कैलकुलेशंस के साथ आप फॉलो कर लोगे तो यू विल बी एबल टू टेक अ सक्सेसफुल ट्रेड, ट्रस्ट मी। मैं कभी कभी मतलब ना बहुत ज्यादा एनालिसिस पे भी नहीं जाती हूँ, कभी कभी मैं लॉजिकल थिंकिंग और थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती हूँ और फिर आई एम डन विद द डे, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है इन अ डे, एंड देन आई एम जस्ट थ्रू इट। जितना मैंने एक चीज जो पर्सनली सीखी और मैं आपको भी बताती हूँ कि जितना कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करने की कोशिश करेंगे, या बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल करके भी आप अपने आप को मतलब आपके दिमाग को खराब कर लेंगे ना, तो हो सकता है ओवरवेल्म हो के कभी कभी गलत डिसीजंस लें। मैं सिंपल सा फॉर्मूला रखती हूँ, कभी कभी बाय लो सेल हाई का ही यही एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करती हूँ, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग बिठाती हूँ कभी कभी, और फिर लो और उसका हाई चेक करती हूँ, और फिर कहीं से मूविंग एवरेज के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस बिठाकर मैं अपना प्राइस का एक रेंज सेट करके मैं अपनी माइंडसेट में मैं अपना एक रेंज बना लेती हूँ। और डेफिनेटली थोड़ा सा इंडिकेटर्स लगा के उस समय पे वो कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, वो भी देख लेती हूँ। जैसे अभी फिलहाल अभी हम देख सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 42 पे चल रहा है अभी डाउन ट्रेंड ना, इतना स्ट्रॉन्ग है अभी, आप देख सकते हो। तो ऐसे में कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनती, भले ही आपने अगर लो हाई भी देख लिया हो। लो इसका 3680 रहा है, तो अभी स्टिल वो तो 3680 तक पहुंचा नहीं, तो यानी चांसेस है कि वो वापस से 3680 पहुंच जाए, या ये भी हो सकता है कि 3680 को भी सरपास कर जाए। तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करने होंगे, थोड़े मूविंग एवरेजेस निकालने होंगे, 5 डेज मिनिमम का मूविंग एवरेज निकालें, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले, लोस का ले, हाइस का ले, ओपन का ले, क्लोज का ले, सबका लेके आप एक अपना 4 कैलकुलेशन करें, और वो 4 कैलकुलेशन के बेसिस पर एक मूविंग एवरेज निकालें आप अपना। यानी ओपन ओपनिंग प्राइजेस को, सारे प्राइजेस को लेकर एक जो आपको उसका एक आंसर आता है, क्लोज का जो आंसर आता है, हाई का जो एक आंसर आता है, और ओपन हाई क्लोज, और क्या कहा मैंने, हाई, ये चारों का आप जब ले लोगे उसके बेसिस पे एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्राइस किस लेवल पे चल रहा है, राइट।
तो एक रेंज आप क्रिएट कर पाओगे अपने आप के लिए, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। एंड मैं भी अपनी थोड़ी सी रीजनिंग इसी तरीके से बिठाती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीजनिंग वर्कआउट कर जाती है। आप भी करें, डायरेक्टली ट्रेड ना करें। अगर आपको थोड़ा सा समझने में इश्यू आता है स्टार्टिंग में, तो बेटर है कि थोड़ी सी डेमो ट्रेडिंग कर लें। डेमो ट्रेडिंग में ये कैलकुलेशंस करें जो भी मैं आपको बताती हूँ, और फिर एक 2 से 4 मरतबा, या फिर थोड़े टाइम तक, एटलीस्ट मिनिमम 10-15 डेज 1 मंथ के लिए एक डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते रहे विद ऑल द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड देखें कि क्या सच में आप जो जो प्रिडिक्शंस लगा रहे हो या जो भी डिसीजंस बना रहे हो वो आपके लिए सक्सेसफुल हो रहे हैं भी या नहीं हो रहे हैं। तो फिर उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यू शुड बी डूइंग दिस और नॉट। जब फिर आप वो सेम फॉर्मूला, जो सेम लॉजिक आप आपके रियल ट्रेड्स में डालोगे, तो फिर शायद हो सकता है कि आपको सक्सेसफुली आप रियल में सच में पैसा बना पाओगे, विच इज वेरी मच पॉसिबल। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू सी। ओके, तो ओके, दैट्स अबाउट इट गाइस। स्टिल वी आर सीइंग कोई बाय पोजीशन नहीं बनी है, कोई बाय पोजीशन नहीं बनी है। ये फर्दर डाउन 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 ही जा रहा है, फिबोनाची के सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए नीचे जा रहा है। कोई बाय पोजीशन नहीं बनी है। ये तो इथेरियम का हो गया। लेट्स सी सुई सुई का क्या चल रहा है ना। इस पे भी इंडिकेटर्स लगा के देख लेते हैं गाइस। लेट्स सी। ओके, आई एम गोइंग टू पुट माय डीएमआई as usual, and I'm also going to put my RSI divergence. Okay, ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा है ये, और डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टिल। सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है, बाइंग प्रेशर बहुत कम है। आप देख सकते हो कि कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रहे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो इसने ओवरसोल्ड की जोन से निकलते हुए ऊपर की तरफ छलांग लगाई हुई है। पर जब तक कोई 2-3 कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल्स नहीं फॉर्म होते हैं, तब तक हम कोई भी फैसला नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उसने कुछ गलती से स्ट्रॉन्ग मतलब फेक आउट सिग्नल्स दे दिए, तो फिर
मुश्किल में पड़ सकते हैं हम सब। So what is your thought process? Anybody would like to share? Please share, okay?
So the price is trying to just go below. It's not able to go above the retracement levels. The price is trending down. So the downtrend is continuing and the trend is very, very strong. A lot of indecision candles are forming every now and then. You can see it very clearly. Some of them are like strong body candles, some of them are indecision candles. Like you can see there's a gravestone doji that is created there. There's also a dragonfly doji that is there. So all of these candles are clearly indicating that there is a lot of indecision in the market, which means at the moment there are no proper buyers and sellers that are able to um, justify this. Of course, the selling pressure is continuing to build, but what is happening is there is basically the decision is very, uh, it's not clear. So that is what it is.
Would you buy at this level, guys? What is your take on it? Anybody in the stream who would like to share, you're welcome to do so.
No buying position still, guys. But this candle, I think the second candle that formed actually kind of has taken the buying line on the DMI a bit up. It was like at 7 from that point of time, but now it's moved to 8 right now. The trend is still strong, 47 it is, but slowly there is a change that is coming in selling and buying pressure. You can see selling has changed its level as well as buying also is changing its level. So, yeah. Guys, as you can see that with the third candle forming here, the buying is slightly becoming stronger. From 7, it has gone to 10.
So let's just wait for some more time because the previous trend was like very, very strong in terms of the downtrend being very, very strong. Uh, yes, of course, it is retracing back from the levels on Fibonacci. It's a good sign, definitely. But we'll also have to remove this and see on the RSI. Let's see on the RSI side. Okay, it's above 40 level now. 50 minutes, 39. 40 what? 43. 49. 57. 39. Here, the situation is totally different, but here also the buying pressure is slightly building up and the selling pressure is coming down.
So this is where your buy position could have been. But within these three candles, it is a bit riskier affair, honestly speaking. I don't know how big of a movement it is. It is like almost, if I talk about this, it's 0.92%, which is like a very, very difficult position it is. Because the trend is still not so strong here at this point in time. So until unless the trend continues to go up and up, predicting at this time is kind of little riskier still. Based on RSI, we are able to take this decision, but honestly speaking, it's not moving until it starts moving upward. Cannot say anything.
Hmm. Now we are coming to a proper position, guys. So if this momentum continues to build up, then we have a very strong position here, because this is what we were heading towards. We want the DI minus to go down and DI plus to go up, and the trend remains strong. That's when our strong buying position can be created.